human reproduction. We human beings are dioecious. Male and female sexes are separate. Both the sexes are not present in a single individual, right? So there is sexual dimorphism, presence of morphologically different male and female is called sexual dimorphism. Sexual dimorphism. Sexual dimorphism means on the basis of characteristics we can externally identify whether the given individual is male or female. Like plants, the events of reproduction are same, that is gametogenesis, gametic transfer, fertilization and post-fertilization changes, that is embryogenesis, and at last fetal birth takes place. We belong to mammals. Human beings belong to mammals. We are mammals. And we know that most of the mammals are viviparous. So the human beings are, हम लोग भी क्या है बेटा, viviparous हैं. Viviparous का मतलब हुआ कि जो यौन वन को बर्थ करता है, यानी डेवलपमेंट जो होता है फीटस का वह मैटरनल बॉडी के अंदर होता है, एंड यंग वन यानी डेवलप्ड वन जो है वह बाहर आता है. तो ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं वह विविपेरस कहलाते हैं. Most of the mammals are viviparous, right? एक्सेप्शन तो पहले कहा था, बायोलॉजी में एक्सेप्शन तो होता ही. So like plants, male and female gametes are also produced in human beings. In the case of plants, we have studied a flower may be bisexual, or a plant may have different types of unisexual flowers, or even plants may be unisexual. In the case of human being, sexes are separate. Sexes are separate. Separate sexes. Separate sexes. Right? Individuals possess a specific organ system to perform the process of reproduction. So, human beings have reproductive system. Human beings have reproductive system. Reproductive system. Means group of organs. अब जानते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. And one of the important system that is involved in reproduction in human beings is reproductive system. So both the types of systems are present in male as well as in female. ठीक है ना? तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, राइट? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन.
reproductive system. Male reproductive system. As I told you, मैंने जैसे आपको कहा कि ये ऑर्गन सिस्टम है, it means there are different organs which combine together to perform the task of reproduction. So in human male reproductive system includes primary sex organs, that is testis, right? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऐसे ऑर्गन को कहते हैं जो गैमेट्स बनाता है। तो टेस्टिस जो है वह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। TES लिख दिए तो दो हो गया, प्लूरल हो गया। TIS कर देंगे तो एक हो जाएगा। एंड बिसाइड्स testis there are additional structures, right? So there are accessory ducts, and some glands are also involved in this task. So accessory glands, and there is a copulatory organ which perform the function of transfer of gametes, that is external genitalia. We call it penis, right? In the case of male. So these are the different organs involved in reproduction. Now come to the primary sex organ, that is the testis. अब टेस्टिस की बात करते हैं और इन कंबाइन में हम लोग सभी को साथ लेते चलेंगे आगे। टेस्टिस जो है ह्यूमन में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। टेस्टिस जो है क्या बेटा है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों? कि स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, दैट टेम्परेचर मस्ट बी बिलो द बॉडी टेम्परेचर। तो टेस्टिस हैंड्स इन ए स्क्रोटम। स्क्रोटम इज अ पाउच that is situated outside of the body, that is extra abdominal. To keep the testis below the temperature of the body by 2 to 2.5 degrees Celsius, means due to extra abdominal nature, the temperature is of testis is about 35 degrees Celsius. However, our normal body temperature is 37 degrees Celsius. Clear? This testis, ये जो testis है, ये fetal stage में बॉडी से बाहर निकल जाता है। एब्डोमेन से नीचे जो है वो मूव करता है। When the fetus is of about 7 months, 9 मंथ में बच्चा पैदा होता है ना, 9 मंथ पूरा होने पर जब हम 7 महीने के होते हैं उस समय में टेस्टिस क्या करता है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो जाता है। टेस्टिस पासेज to the scrotum through a tube-like structure known as inguinal canal, right? Inguinal canal.
इससे पास करता है and this canal gets filled with the connective tissue through which nerves, blood vessels, lymphatic channels all passes. Right? क्या कहा कि एब्डोमेन से एक ट्यूब स्कोटम को कनेक्ट करता है, उस ट्यूब का नाम कहा इंजुइनल कैनाल, and after passing the testis to the scrotum, this canal gets filled with the connective tissue. और इस कैनाल से होकर के पास करता है ब्लड वेसल्स, lymphatic channels and nerves, and all these blood vessels, lymphatic channels, nerves together with the connective tissue form a cord-like structure known as spermatic cord. In some of the animals, testis may be intra-abdominal. कुछ एनिमल्स में इंट्रा-एब्डोमिनल टेस्टिस होता है क्योंकि वहां स्पर्म डेवलपमेंट के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, बॉडी टेम्परेचर पर ही स्पर्म का डेवलपमेंट। जैसे आप एलिफेंट देखना, किसी भी एलिफेंट में मेल में टेस्टिस होता है तो आपको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस नजर नहीं आएगा। व्हेल में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस नहीं होता है, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है। राइट? ये जो टेस्टिस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स जो गैमेट्स बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। सो टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। क्यों? क्योंकि ये स्पर्म्स बनाते हैं। फीमेल के केस में हम पढ़ेंगे ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है क्योंकि ओवरी एग बनाती है। तो टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया मेल के केस में। The organs that help in reproduction other than producing the gametes उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो अदर स्ट्रक्चर्स जो भी हम पढ़ेंगे वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर? अब इस टेस्टिस की बात यदि हम करें तो ये तो आपने देख लिया कि दो टेस्टिस हमारे पास हैं। यदि किसी के पास एक टेस्टिस है इसका मतलब वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। हाँ, किसी किसी एनिमल में नेचुरली एक ही टेस्टिस होता है तो उसके सारे स्पीशीज में एक ही टेस्टिस होगा। यदि आप एस्कैरिस पढ़ोगे तो एस्कैरिस में एक ही टेस्टिस होता है। एंड रिमेंबर, मैं किसी क्लास में आपको कहा होगा कि एस्कैरिस का जो स्पर्म होता है उसमें फ्लैजिला नहीं होता, अमीबा की तरह मूव करता है। राइट? सो इन आवर टेस्टिस, ये जो टेस्टिस है इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखते हैं। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो है। इन आवर टेस्टिस स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। सो टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। यह स्क्रोटम में हैंग करता है बिलो द एब्डोमेन। बर्थ के समय से ही आपको बाहर दिखता है, ये नहीं कि किसी का बर्थ के बाद बाहर निकलता है। क्यों निकलता है ये भी बता दिया। तो बाहर तो स्किन का पाउच देख रहे हैं, दैट इज स्क्रोटम। यदि हम एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखें तो टेस्टिस का जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। राइट? एंड दिस ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया जो है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस दैट इज स्ट्रंग
स्ट्रॉन्ग एंड टफ। तो यदि हम इस टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो लेट अस दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड दिस ट्यूनिका एल्बुजिनिया folds to form 250 to 300 compartments into the testis। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ये फोल्ड कर जाता है अंदर की तरफ भी और टेस्टिस को डिवाइड करता है डिफरेंट चेंबर्स में, कंपार्टमेंट्स में। और ये जो कंपार्टमेंट्स है उसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं बेटा? एक कंपार्टमेंट हो गया, these compartments are testicular lobules, testicular lobule, राइट। ये बाहर वाला टफ लेयर है, इसको क्या कहें? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ना ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या कितनी है? 250 to 300 इन ईच टेस्टिस। दो टेस्टिस है ना आपके पास, तो हर एक टेस्टिस में 250 से 300 के बीच में होता है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब हर एक लोब्यूल में ईच लोब्यूल हैज 1, 2 और 3, यूजुअली 2 to 3 specific tubules known as seminiferous tubules। इसके अंदर होता है seminiferous tubules, इसके अंदर seminiferous tubules होता है, seminiferous tubules होता है हर एक के अंदर। 2 से 3 क्या होगा बेटा? seminiferous tubules होते हैं हर एक के अंदर। Each testicular lobule has 2 to 3 क्या है इसमें देख लीजिए आप? seminiferous tubules। ये हो गया आपको seminiferous tubule, seminiferous tubule, राइट। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इट इज द साइट वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है टेस्टिस के लोब्यूल से बाहर निकलता है और एक कॉमन नेटवर्क बनाता है जिसको हम कहते हैं रीटी टेस्टिस। एंड द फाइन पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल दैट ज्वाइंस द रीटी टेस्टिस इज कॉल्ड ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये क्या हो गया? ट्यूबुलाई रेक्टाई। यानी स्पर्म्स जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनेगा और वह ट्यूबुलाई रेक्टाई से बाहर निकलेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बाहर निकलेगा। और ये सारे जो ट्यूबुलाई रेक्टाई है एक कॉमन चेंबर में खुलेगा, एक कॉमन चेंबर में खुलेगा। ठीक है? एक कॉमन चेंबर में खुलेगा। इस कॉमन चेंबर जो है जहां पर सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई खुलते हैं, दिस चेंबर इज नोन एज रीटी टेस्टिस। इसको क्या कहेंगे? रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस। Now, a large number of fine tubules arise from rete testis। यहाँ से rete testis से large number of fine tubules arise होता है। यहाँ से देख रहे हैं ना, large number of fine tubules जो है वह
chamber, that is known as एपिडाइडाइमिस। तो ये सारे जो है एक कॉमन चेंबर में खुलते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा? एपिडाइडाइमिस। राइट? These fine tubules जो रीटी टेस्टिस से एपिडाइडाइमिस में निकलता है, दिस इज योर एपिडाइडाइमिस। एपिडाइडाइमिस। These tubules are known as vasa efferentia, इसको हम कहते हैं efferentia। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। राइट? अब देखो ये जो एपिडाइडाइमिस है, एपिडाइडाइमिस इज द प्लेस वेयर स्पर्म्स आर स्टोर्ड। राइट? स्पर्म्स आर स्टोर्ड and it tends to be mature, ये मैच्योर होता है। स्पर्म्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया है कहां पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। वहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आगे देखेंगे स्पर्म्स न्यूट्रिएंट्स लेता है, डेवलप करता है, एंड आफ्टर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट इट पासेस टू रीटी टेस्टिस। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना स्पर्मिएशन कहलाता है। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन समझे? स्पर्मिएशन मीन्स रिलीज ऑफ स्पर्म। स्पर्मिएशन पूछेगा तो क्या कहेंगे? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू द रीटी टेस्टिस। राइट? एंड अब ये आगे कहां? एपिडाइडाइमिस में। एपिडाइडाइमिस joins a long and narrow tubule that passes upward, right, into the abdomen। अब वो एब्डोमेन में जाएगा टू ज्वाइन यूरेथ्रा। ठीक है? तो यहां से ये जो ट्यूब है या कहां जाएगा बेटा? ये ऊपर की तरफ जाएगा। दिस ट्यूब इज नोन एज वास डिफरेंस। इसको क्या कहेंगे? वास डिफरेंस। Mass difference, right? So this is the structure of testis। ये जो पार्ट आपने क्या क्या देखा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का कंपार्टमेंट्स हो गया, जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रीटी टेस्टिस में खुलता है थ्रू ट्यूबुलाई रेक्टम। रीटी टेस्टिस एपिडाइडाइमिस में खुलता है थ्रू वास इफरेंसिया, एंड एपिडाइडाइमिस कहां खुलता है? वास डिफरेंस में खुलता है। दैट कंडक्ट्स द स्पर्म ड्यूरिंग ejaculation, during sexual act, right? Now I have told you that testis is the site of sperm formation, and sperm formation takes place in seminiferous tubules। तब थोड़ी सी seminiferous tubules की बात करें, ठीक है? अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इसकी seminiferous tubules की। तो हम यदि seminiferous tubules को देखें तो दिस इज
seminiferous tubules, उसका सेक्शन देखते हैं. These are the other tubules, right? ये जो seminiferous tubules है, इसका जो वॉल होता है innermost, having two types of cells, right? इसका जो वॉल है innermost, उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं. ये जो आप सेल्स देख रहे हैं कॉलम लाइक, इस सेल को हम कहते हैं सर्टोली सेल. इसका नाम क्या है? सर्टोली सेल. सर्टोली सेल. एंड द सेल्स, बाकी जो सेल्स हैं उसको हम लोग कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स. सर्टोली सेल्स के बीच जो सेल्स हैं वह क्या है? जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स. एंड दीज जर्मिनल epithelial cells are the cells that produce sperms, right? So it has sperm producing cells. Germinal epithelium has sperm producing cells known as sperm mother cell or spermatogonia. So here ये जो सेल्स है ये स्पर्मेटोगोनिया है. स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर होगा, गोनिया प्लूरल होगा. तो व्हाट वी सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन द वॉल ऑफ seminiferous tubules. These cells are the cells of germinal epithelium. Germinal epithelium. These cells act as sperm mother cells. Sperm mother cells, or you can say spermatogonia. Spermatogonia. And between the seminiferous tubules, there are some cells, specific cells. Those cells are known as interstitial cells of testes, or in simple way we are calling them Leydig cell. उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, ये जो सेल्स है seminiferous tubules के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में इसको हम लोग क्या कहते हैं? Leydig cells. Leydig cells, right? Spermatogonia in course of time by means of spermatogenesis produce sperms. Spermatogonia क्या बनाएगा? Sperms बनाएगा. Meiosis होगा. Sperms are male gametes. Gametes are always haploid. So यहाँ पर sperms बनेंगे. Sperms बन रहा है बेटा. बहुत सारे sperms बनेंगे. Meiosis होगा. एक spermatogonium से 4 sperm बनेगा ना. And after formation, sperms जो है वह सर्टोली सेल से अटैच हो जाता है. किससे अटैच हो जाता है? सर्टोली सेल से अटैच हो जाता है to get nutrients. And after development, these sperms are released from seminiferous tubules into the rete testis. बताया था ना स्पर्मिएशन. तो आपने क्या देखा? ये जो seminiferous tubules है उसके दीवार में, उसके वॉल में दो तरह के सेल्स होते हैं. Some cells are larger, specific, known as
Sertoli cells, while others which act as gamete mother cells are known as spermatogonia. And some cells which are between the in the space between the seminiferous tubules are known as Leydig cells. पर ये 3 टाइप्स के जो सेल्स हम देखे हैं, इस तीनों का थोड़ा फंक्शंस देखते हैं क्या है। तो 3 तरह का सेल मिला आपको, सर्टोली सेल मिला, Leydig सेल्स मिले और स्पर्मेटोगोनिया मिला। So now let us discuss the significance of these cells. Significance of these cells. Spermatogonium, right? It is a sperm mother cell. So its function is formation of spermatozoa. Sperms, इसका फंक्शन क्या है बेटा? ये स्पर्म्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्पर्म्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू? स्पर्म्स बनाएंगे। और एक सेल से कितना स्पर्म्स बनेगा? 4. We have to describe later on the process of spermatogenesis. And यहाँ पर डिवीजन कौन सा होगा? Meiosis, reduction division. Because ये spermatogonium जो है, it is diploid and sperms are haploid. तो फंक्शन क्या हो गया समझ गए? स्पर्मेटोगोनियम का क्या फंक्शन हुआ? Now comes to the Leydig cells. Leydig cells. इसका दूसरा नाम भी बताया था मैंने आपको, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। एंड Leydig cells release male sex hormones. Leydig cells release male sex hormones. Male sex hormones are known as androgens. Androgens. Leydig cells release androgens, male sex hormones, and the androgen that is most important one is testosterone. The most important one which is released in large amount is testosterone. Testosterone. And this testosterone is involved in spermatogenesis, is involved in gametogenesis, is involved in sperm formation, means spermatogenesis, as well as in the development of secondary sexual characters of male. आप लोग 12th में है ना, मुझदारी तो आ गई होगी मेल को, ठीक है? ये देख रहे हैं ना एडम सैंपल, वॉइस आपका चेंज हो रहा है ना, क्या हो गया होगा? तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल है, एज वेल एज formation of sperms are governed by testosterone, which is released by Leydig cells. The third cell that is present in the seminiferous tubule. Leydig cell तो बात आया, seminiferous tubule से बाहर है, 2 tubules के बीच का जो स्पेस है वहां पर है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। लेकिन स्पर्मेटोगोनिया एंड
Sertoli cells. Sertoli cells. ये सर्टोली सेल कहां पर है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. इन द केस ऑफ प्लांट हम लोगों ने पढ़ा था कि टैपिटम जो है वो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिएंट देता है. सिमिलरली इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, सर्टोली सेल जो है वह न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है डेवलपिंग स्पर्म को. तो सर्टोली सेल क्या गया? बेटा समझ में आ गया? न्यूट्रिएंट्स देता है. किसको देता है? समझ में आ गया होगा. न्यूट्रिएंट्स, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू डेवलपिंग स्पर्म्स. दूसरी बात, ये सेल कुछ प्रोटीन रिलीज करता है. उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन that helps in spermatogenesis. पढ़ेंगे आगे स्पर्मायोजेनेसिस क्या होता है. So androgen binding proteins are released by Sertoli cells. And besides, इसके अलावा सर्टोली सेल हार्मोन भी छोड़ता है, inhibin. It is required to check the activity of FSH हार्मोन. आगे हम देखेंगे FSH, LH यानी हार्मोन कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे, वहां पर हम डिस्कस करेंगे. सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय सर्टोली cells presenting seminiferous tubules. ठीक है? So in this way we have studied about the testis, that is one of the most important organ related to reproduction, involving production of gametes or sperms.